So therefore, I will especially write this that this is incorrect. So this should be equal to m into mass of man into velocity of man with respect to ground, which is VO plus V, right, plus mv, and then I equate the initial momentum to the final momentum. Equate the initial momentum to the final momentum. This gives me V is equal to minus mv naught upon m plus m. Okay, this is the velocity of the man. Sorry, velocity of the cart. सर कार्ट में वेलोसिटी मैन के जंप करने से आई है ना, हाँ, तो फिर सर वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कैसे होगा? ऐसा थोड़ी ना होएगा कि आदमी जब जंप करेगा तो कार्ट की वेलोसिटी आएगी। जब आदमी अपने वेलोसिटी को चेंज करना शुरू करेगा 0 to v0, तब तक कार्ट की वेलोसिटी 0 से v जा चुकी होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? ओके सर। What you are thinking is कि वो आदमी आया, वो आदमी जो है कूद गया, फिर कार्ट चलना शुरू हुई। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग 0 है। इसलिए जैसे ही वो मैन अपना वेलोसिटी 0 से इंक्रीज करेगा कार्ट के रिस्पेक्ट में ही, कार्ट की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। जब तक आदमी की वेलोसिटी v0 होएगी जस्ट बिफोर ही इज अबाउट टू जंप, तब तक कार्ट की वेलोसिटी v हो चुकी होगी। ठीक है ना? Then the jump occurs. When the jump occurs, the contact between the man and the cart is now lost. Therefore, the friction force which was acting between the man and the cart, which was responsible for the acceleration of both the man and the cart, is no longer there now. Therefore, the velocity of the man will now become constant v0, and the velocity of the cart will now become constant v, which we are finding out. सर तो इसका मतलब है अगर उसने जंप करने के लिए रेडी हुआ लेकिन उसने बीच में ही कैंसिल कर दिया तो कार्ट आगे मूव करता रहेगा? नहीं, फिर रुक जाएगा। अगर वो रुक गया आदमी तो कार्ट भी रुक जाएगा। बोट वाली प्रॉब्लम याद है ना जो लास्ट टाइम हमने किया था? बोट वाली प्रॉब्लम याद है ना जो हमने लास्ट क्लास में किया था? एक आदमी जब एक एंड से दूसरे एंड जा रहा है बोट के, तो बोट कंटिन्यूअसली मूव कर रही है ना। कहीं भी अगर वो आदमी रुक गया तो बोट भी रुक जाएगी। उसी तरीके से अगर ये मैन कार्ट के ऊपर दौड़ना शुरू करता है और उसके बाद से रुक जाता है तो कार्ट भी रुक जाएगी। ठीक है? ओके। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो सकता। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 ही रहेगा चाहे जो हो जाए। अब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 ही रहेगा मतलब कि ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बार जब वो आदमी कार्ट से जंप कर गया तो उनके बीच का इंटरैक्शन खत्म हो गया। अब ये वेलोसिटीज चेंज नहीं हो सकती। तो हमारा जो इवेंट है, आपके मन में इंस्टेंटेनियस इवेंट आ रहा है, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस इवेंट नहीं है। दिस इज एन इवेंट विच हैज टेकन टाइम। What is that time? That time is the time during which the man started running, changed his velocity from 0 to v0 with respect to the cart. हमारा जो event है, it is not instantaneous. Don't think about it as instantaneous event. Okay, next question. Two men are standing on same edge of cart. They jump one after the other
they jump one after the other with velocity v naught with respect to the cart. Okay? Why am I going back to with respect to the cart? If you think about it, if you are walking on a train, then it is always with respect to the train. अगर आप ट्रेन में अपने दोस्त के साथ जा रहे हो और आपका दोस्त जो है वो उठ के गया पानी पीने के लिए, तो यू विल नॉट से कि अबे तेरी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर प्लस समथिंग हो गई. For you, the velocity will be with respect to the train only, right? So the man is jumping with respect to the cart. So therefore, the velocity is with respect to the cart. Find the final velocity of cart. सर 2 मैन का मास बराबर है है सर, दोनों मैन का मास बराबर है. हाँ, मास m है. हाँ, वो हमेशा सेम रह रहा है. एंड सर दोनों v नॉट से मूव जंप करेंगे. हाँ, दोनों सेम मास है, सेम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट से जंप करें. सर यहाँ पे हमारा टी मतलब जो उन दोनों के बीच में होगा वो ऑलमोस्ट जीरो होगा ना? क्या होएगा? जब एक के बाद एक जंप करेंगे तो बीच का टी जीरो होगा ना? नहीं, मैंने क्या बोला है? सो दिस इज वेयर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. मैंने क्या बोला है यहाँ पे? आइडेंटिफाई द सिस्टम, आइडेंटिफाई द इवेंट. हाउ मेनी इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस? There are two events taking place. Is the system the same? Does the system remain the same in both the events? नो सर. नो सर, No, it does not. एक मैन कम हो जाएगा. जी बिल्कुल सही. पहला इवेंट जब होएगा उसका जो सिस्टम है वो कार्ट प्लस 2 मैन, और जो दूसरा इवेंट होएगा उसका जो सिस्टम है वो कार्ट प्लस 1 मैन. सर मैन का मास सेम है. सेम, हाँ, एम एम लिख दे रहा हूँ. So there are two people here, A and B. M and M. नहीं शान, पूरा आंसर. हाँ तरुण, ये मेरे ख्याल से सही आंसर. गुड. ओ अनीश, बाप रे, इतना लंबा. नहीं, गलत आंसर है अनीश.
बार अगर तो एक्स्ट्रापोलेट करेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो सेकंड इवेंट हो रहा है उसमें जो इनिशियल मोमेंटम है वो जीरो नहीं है। सर मोमेंटम जीरो नहीं लिया। इनिशियल वाला, हाँ सर। अच्छा ठीक है। लग तो रहा है। चलो, so let me show you. नहीं चलिए, गड़बड़ आंसर लग रहा है। So event 1, system is M and M and M. So initial momentum must be equal to momentum of M1 plus momentum of man 2 plus momentum of cart, which is 0 plus 0 plus 0. Final momentum must be mass of man who has jumped into velocity of man who has jumped with respect to the ground plus mass of man who has not jumped into velocity of the man who has not jumped plus mass of the cart into velocity of the cart, right? We equate these two and we get V is equal to minus mv naught divided by m plus 2m. Okay, so this is the velocity of cart plus m2 after m1 jumps off, right? One part of the question is now over. Second part, event 2. The system now consists of M and M. One man remains. So the initial momentum must be equal to mass of man plus velocity of man plus mass of cart into velocity of cart. Right? ये V यही V है. This V is this V. Then event 2 occurs. Final momentum will be equal to mass of man into velocity of man with respect to the cart. But remember that with respect to the cart, the velocity of man is v naught plus v. Okay, so here I must write mass into velocity of the second man with respect to the ground will be v naught plus v dash, where v dash is the velocity of cart after the second jump. V dash is the velocity which we want to find, plus mass of cart into the new velocity of cart. सर वो after v plus the v dash क्यों नहीं हुआ? कौन सा वाला? p फाइनल में v plus v dash क्यों होएगा? Man jumps with a velocity v naught with respect to the cart.
v प्लस v डैश क्यों है? ठीक है इवेंट के पहले क्या वेलोसिटी थी और इवेंट के बाद क्या वेलोसिटी है, राइट? समझ रहे हैं ना? हाँ सर So let me equate m plus mv is equal to mv naught plus m plus mv dash. Okay, remember that we want to find v dash, right? So v dash will be equal to v minus mv naught upon m plus m. मैंने थ्रू आउट m प्लस m से डिवाइड कर दिया और mv नॉट को मैं उधर ले गया, तो v की वैल्यू अब मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ माइनस mv नॉट अपॉन m प्लस 2m माइनस mv नॉट अपॉन m प्लस m. This will be the velocity of the cart after the second jump. This is the answer. अब आप इसको कॉमन लेके या जो भी करना है you can. ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ रहा हूँ. हाँ, हर इवेंट के लिए अलग से कंजर्वेशन करना पड़ेगा. यस. So now we have two men. Now they are standing on opposite ends. So A jumps off with velocity v naught with respect to cart. Then B jumps off with velocity v naught with respect to cart in opposite direction. Find final velocity of cart. Same answer है क्या? Different answer.
सर दूसरे में वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा। फिर साइन का डिफरेंस आएगा। हाँ, वेरी गुड। हाँ सर। हाँ, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन किया है उसमें केवल एक स्टेप में हम साइन चेंज कर देंगे, दैट्स इट। सो इवेंट 1 same as before, and we get v is equal to minus mv naught upon m plus 2m. Event 2 system is m and m. So basically I'm going to get initial momentum will be the same, m plus m into v. Final momentum will be m into minus v naught plus v dash plus m into v dash. Right? So this is the difference. So this tells me that B jumps opposite to A. Okay. Now it's very simple. So we get m plus m into v. सर पी हाँ, फाइनल में वी नॉट प्लस वी नहीं होगा वी डैश की जगह? क्या क्या क्या? सर पी फाइनल में माइनस वी नॉट प्लस वी नहीं होगा? P क्यों होगा बच्चा? सर उसका कूदते समय इंस्टेंटेनियस निकाल रहा है ना? हाँ, तो ये इनिशियल है ना और ये फाइनल है, तो ये जो इनिशियल मोमेंटम है ये फाइनल मोमेंटम तक आने के लिए इवेंट हुआ होगा ना। क्या इवेंट हुआ होगा? बी ने अपनी वेलोसिटी रिलेटिव टू द कार्ट जीरो से वी नॉट चेंज करी होगी, स्पीड अपनी जीरो से वी नॉट चेंज करी होगी, समझ गए सर। है ना। उस ड्यूरेशन में ये वी से वी डैश होगा, माइनस एम वी नॉट प्लस एम वी डैश. So v dash will be equal to just the same as before. This will be equal to mv naught by m plus n plus v, which is minus mv naught upon m plus 2. हाँ, किसमें क्या होना चाहिए भाई, फिर से बता दो क्या बोल रहा है? किसमें होना चाहिए m plus 2 m? RHS में क्या होना चाहिए? नहीं हार्दिक, वो ऊपर वाले में है ना, इवेंट 1 में है ना। इवेंट 2 में तो सिस्टम केवल मास और मैन है ना, एक ही मैन बचा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी और कार्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक सेकंड,
सर ये फोर्थ क्वेश्चन हाँ ये फोर्थ। हो गया दीक्षा, चेंज करो। यस सर। ओके नेक्स्ट। तो अब वन कार्ट और टू मैन हो चुका है। अब दो कार्ट और एक आदमी। M M M. Initially everything is at rest. Okay. Yeah. Let's make it more. Uh, चलो रेस्ट पे ही लेते हैं। सेम ही आएगा। So the man jumps from rear cart to front with velocity v naught with respect to the rear cart. Find final velocity of front. नहीं पार्थ ने सही बताया, शिवेन तेरा गलत आंसर। मैंने क्या बोला था शिवेन, गलती कब होएगी? When will you be wrong?
from, see, law of conservation of momentum itself is very easy. नहीं यार ये गलत है. It is only when you will take velocities. हाँ चेतन बिल्कुल सही है. Only when you take the velocities from different frames. So, नहीं खुशी गलत गलत गलत. हाँ अंशुल बिल्कुल सही. माइनस तो नहीं आना चाहिए क्योंकि आगे वाला कार्ड तो आगे ही जाएगा ना. So let's start. Then event 1, man jumps. Okay, so if man jumps, then we have initial momentum, momentum of man, momentum of cart, 0 plus 0. नहीं गलत, बिल्कुल सही है संचय. So momentum of man plus momentum of सेम ही cart. रहेगा. हाँ क्या बोला? इवेंट 1 तो सेम ही रहेगा. दोनों क्या रहेंगे? इवेंट 1 तो सब में सेम ही है ना. Event 1 सब में से. So this will become m v naught plus v dash. But I want to write this here for some reason. So m v dash equate, and we get v dash is minus m v naught upon m plus. Now what is so important is that not only do you recognize event 2, but before you recognize event 2, you must recognize the system. Right? So what will be the system? If in event 1 this is chosen as the system, then event 2 क्या है? System क्या है event 2 के लिए? Event 2 के लिए तो ये है system. Right? हाँ, man plus second card. Right? Not only the second card, man plus second card. आदमी लैंड करेगा ना सेकंड कार्ड के ऊपर. असाइनमेंट है. m plus second m. So initial momentum will be momentum of man plus momentum of cart. Right? Now this is 0. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये 0 नहीं है क्योंकि हमने जो आदमी को सिस्टम लिया है, शायद मैंने थोड़ा ये डायग्राम गलत बना दिया. हमने जो आदमी को सिस्टम लिया, सिस्टम का पार्ट लिया है, वो तब जब वो हवा में है. This is the second system. So the velocity of the man is not 0, but it is this much. This is the initial momentum. So this must be v naught plus v dash. And then the final momentum must be mv double dash plus capital mv double dash, because जब आदमी लैंड कर गया कार्ट पे तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई. मैन की भी वेलोसिटी सेम हो, मैन और कार्ट दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई. इट इज दिस v double dash that we want to find. So m plus m into v double dash is equal to m into v naught plus v dash. Let me put in the value of v dash now. This is equal to mv naught upon m plus m. So v double dash will be equal to m v naught
upon m plus n whole square. I'll explain this again. I'll change the slide now. So we have two distinct events happening. The first event is like this. First event is like this. This guy jumps off. And for the second event, I'll just make these cards smaller so that is that this guy lands. So for the first event, I am choosing system to be cart 1 and man. And for the second event, I am choosing the system to be man and cart 2. So for the first event, after the first event, when the man jumps off, then the velocity of this cart is v dash, and the velocity of this man is v naught plus v dash. Remember that. Remember that this is the final velocity of man. With respect to cart after event 1. Right? तो ये इवेंट 1 में सब कुछ इनिशियली 0 वेलोसिटी पे था. मैन जंप कर गया, मैन हवा में है, तो जब मैन जंप कर गया तो कार्ट 1 v dash वेलोसिटी से पीछे चला गया, which we have already figured out, and the velocity of the man in air is v naught plus v dash, because that is the velocity of the man, that is the final velocity of the man with respect to the ground. So now the second event occurs, and the second event is for this green system. The second event is that the man lands on the second cart. And when the man lands on the second cart, the velocity of the man and the velocity of the cart become the same. Okay, because lands on the second cart का मतलब फिर वो cart पे rest पे आ गई. So for the first event where the system is cart 1 and man, I have carried out the same analysis that we did अभी तक. And for event 2, the system is man and the second cart, for which the initial momentum is the momentum of the man plus the momentum of the cart. Momentum of the cart is 0 because the cart was not moving. And the momentum of the man is mass of the man multiplied by the velocity of the man after the jump, the velocity of the man with respect to the ground. And finally, the man has a velocity which is the same as the velocity of the cart. So the final momentum after event 2, which is that the man lands on the cart 2, is that mass of man into velocity of man plus mass of cart into velocity of cart. आया समझ में तरीका? Is this understood? सर अगर कार्ट 2 पे फ्रिक्शन नहीं होता तो फर्क आता क्या आंसर में? तब वो आदमी कूद ही नहीं पाता फिर से, मतलब कूद क्या नहीं पाता, मतलब फिर कार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो अपना जो भी आदमी को करना है करता है. आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए यही इंटरनल फोर्सेस, they add up to 0, they have no consequence for us in the outside world, right? But please never fall into that trap. The summation of internal forces is 0, but the work done by internal forces is not 0. This is not a direct
You cannot draw this direct analogy. In fact, this analogy borders on being stupid. The work done by internal forces is almost always not zero, and the sum of internal forces is always zero. Right? Okay. एक और चलेगा क्वेश्चन. चलो देखो. So now there are two tracks. Okay? There are two railroad tracks running parallel to each other. We have on one track cart 1 plus man 1. Okay. Now we are looking at the top. We are looking from the top. Sorry, ऊपर से मेरे को केवल आदमी का सर दिखाई दे रहा है. This is moving with a velocity of v. On the parallel track, we have cart 2 plus man 2. ये आदमी का सर दिखाई दे रहा है ऊपर से. This guy, these two guys are moving with velocity v2. Okay. When the two carts cross each other, the men jump perpendicular to the tracks. मैंने parallel perpendicular एक साथ बना दिया क्योंकि बैटरी लो का सिग्नल आ गया. Perpendicular to the tracks and exchange places. As a consequence, velocity of cart 1 becomes v and cart 2 stops. Find v1 and v2. बाकी सब वही सेम है. मैन का मास m है, कार्ट का मास कैपिटल m है. यहाँ पे भी m है. Right, I hope the question is understood. Try this. Let's get it charged here. सर मैन की वी नॉट विथ रिस्पेक्ट टू कांटे की ग्राउंड. So the trick here is to choose the correct system. That's it. Like I said ना, एंगल ये मोमेंटम कंजर्व करना आसान पार्ट है. सिस्टम चूज करना और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना ये प्रॉब्लमेटिक है.
So the question is assuming, or the person who has asked the question is assuming that you understand how railroad carts work. So in a railroad cart, if you have ever seen, if you look at the cross section of the railroad, something like this. But if you look at the cross section of the wheel, then the cross section of the wheel is going to be something like this. Aryan, it does not matter with what velocity they jump, because they are jumping perpendicular to the tracks. So if this is the wheel and this is the track, right, then there is a normal reaction happening in this direction. That means that the wheel can never go here. Okay. This means that in this direction, momentum will not be conserved because the track will be applying some sort of a perpendicular force. Momentum will only be conserved in the horizontal direction because friction is absent. सर आपका आंसर पूछा था Very good path, yes. सेकंड वाला शायद गड़बड़ है, एक बार देखना, क्योंकि सेकंड वाला गड़बड़ है, पहला वाला सही। हाँ शिवेन, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नहीं चैतल, थोड़ी सी गड़बड़ है, देखो थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ। और ये शिवेन बिल्कुल सही। सर दूसरे वाले का गलती समझ गया, वो माइनस कैपिटल एम भी है। हाँ सर वो माइनस कैपिटल एम भी है ना। हाँ हाँ हाँ। So system 1, क्या सिस्टम चूज करना है मेरे को ताकि मैं क्वेश्चन कर ले जाऊं? System that I have to choose is cart 1 plus man 2. This is the key. So the initial momentum is momentum of cart 1 plus man 2. This is equal to capital M V1 minus small m V2. Final momentum will be equal to m plus m into v. v थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश हो गया। Similarly, system 2 will be cart 2 plus man 1. Right? And you can now figure it out. It's very easy. It's not difficult at all. The difficulty lies in choosing the system. If you have successfully chosen the system, then it is
then it's very, very simple. ठीक है? Okay. बिल्कुल सही अंशुल, हाँ, बिल्कुल सही. So the answer will be small mv upon m minus n, and the other will be capital MV upon n minus n. Right? And you should ask me what will happen if m is equal to m. Well, if m is equal to m, then the condition will never happen that cart 2 stops and cart 1 का velocity v हो गया. Okay, I'll stop here. And in the next class, again, we'll see many, many more applications of conservation of momentum. Just like work energy theorem, conservation of momentum is not a standalone thing. It always comes, it always is to be applied in conjunction with something else. हाँ, it's बिल्कुल आराम से, बिल्कुल. So this conservation of momentum is always in conjunction with something else. Right? So again, like I said, we are building a set of tools. So F is equal to ma, constraints, work energy theorem, and now conservation of linear momentum. And in the next chapter, we'll build up the tool of conservation of angular momentum, and we can use any and all of these tools in a mechanics question to solve. In fact, the gist of mechanics is only this. So, okay, I'll see you in the next class. We'll continue in the next class. इसके बाद कुछ नहीं है, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को. कुछ नहीं है ना इसके बाद? चलो, बाय बाय, बाय बाय. कोई स्क्रीनशॉट है जो कोई भूल गया है लेना, मैं वापस जाऊँ? Any screenshot which somebody has not taken? सर ये लास्ट क्वेश्चन फिर से बता सकते हैं? ये वाला कार्ट 1 मैन 1 वाला? हाँ सर. Okay. देखो. So the situation is that when the two carts are opposite to each other, so cart 1 is here, cart 2 is here, the men inside the cart, they jump perpendicular to the tracks. That means that their horizontal velocity is not affected at all. This means that even after the jump, the velocity of the cart remains v1, velocity of the man remains v1. Of course, the man has some velocity in this direction, which I am not bothered about, because in this direction, the momentum will not be conserved, because the railroad is actually going to apply a force on the carts. इतना आया समझ में जो मैंने बोला? Yes. So the first concept to understand, I'll repeat still, the first concept to understand is that when both the men jump off, the velocity, the horizontal velocity of both men and cart, it remains the same. Now this green guy is going to land in the blue cart, and the blue guy is going to land in the green cart. So what I do is that I take this as one system, and then I take this as the other system. ये आया समझ में? ये आया समझ में? Okay. Once you have chosen the system, once you are sure that, and there is a rationale behind it. ऐसा नहीं है कि मैं random में फिर कर रहा हूँ. The reason why I am choosing the yellow system is because of the fact that this guy is going to land here. Eventually, the velocity of this guy and this cart is going to be the same.
and the velocity of this guy and this cart is going to be the same. Therefore, my rationale of choosing the system. So for the yellow system, then I will write initial momentum as mv1 minus momentum of the man as minus mv2 is equal to m plus nv, because when this green guy lands in the blue cart, the velocity of the cart plus man becomes v. And for the red system, I will have minus mv2 plus mv1, okay, minus because of the directions, is equal to 0. Because when the blue guy lands in the green cart, it is given that it stops, right? Solve these two equations, get the value of v1 and v2. v1 and v2 you'll get. ठीक है? Any doubt remaining in this? Okay, sure. Take. Sure, guys. I'll see you in the next class. Bye bye. Thank you, sir. क्या कटूंगे? मैं किसको काटता हूँ भाई? Right. मैं सीधा साधा आदमी हूँ. तो सामने रहता तब मैं बताता तेरे को. करूंगे. हाँ, अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये तो शुरुआत है. चलो, मैं जा रहा हूँ. बाय बाय.